Great job. What we've done has been amazing by any standard. We rebuilt the United States military. We created a new force called Space Force. That in itself would be a major achievement for a regular administration. We were not a regular administration. We took care of the vets, 91% approval rating. They've never had that before. The vets have given us, the VA, the vets have given us an approval rating like has never been before. We took care of our vets and our beautiful vets. They were very badly treated before we came along. And as you know, we get them great service, and we pick up the bill, and they can go out and they can see a doctor if they have to wait long periods of time. We got it so that we can sadly get rid of people that don't treat our vets properly. We didn't have any of those rights before when I came on, so our vets are happy, our people are happy, our military is thrilled. We also got tax cuts, the largest tax cut and reform in the history of our country by far. I hope they don't raise your taxes, but if they do, I told you so. And if you look at the regulations, which I consider the regulation cuts to be maybe even more important, that's why we have such good and have had such good job numbers. The job numbers have been absolutely incredible. When we started, had we not been hit by the pandemic, we would have had numbers that would never have been seen. Already our numbers are the best ever. If you look at what happened until February a year ago, our numbers were at a level that nobody had ever seen before. And even now, we really built it twice. We got hit. Nobody blames us for that. The whole world got hit, and then we built it again. And now the stock market is actually substantially higher than it was at its higher point prior to the pandemic. So it's really, you could say we built it twice. And you're going to see incredible numbers start coming in if everything is sort of left alone. Be careful. Very complex. Be careful. But you're going to see some incredible things happening. And remember us when you see these things happening, if you would. Remember us, because I'm looking at elements of our economy that are set to be a rocket ship up. It's a rocket ship up. We have the greatest country in the world. We have the greatest economy in the world. And as bad as the pandemic was, we were hit so hard, just like the entire world was hit so hard. Places that thought they got away with it didn't get away with it. They're suffering right now. We did something that is really considered a medical miracle. They're calling it a miracle, and that was the vaccine. We got the vaccine developed in 9 months instead of 9 years or 5 years or 10 years or a long time. It was supposed to take a long time, many, many years to develop a vaccine. We have 2 out. We have another one coming almost immediately, and it really is a great achievement. So you should start to see really good numbers over the next few months. I think you're going to see those numbers really skyrocket downward. And I can only say this, we have worked hard. We've left it all, as the athletes would say, we've left it all in the field. We don't have to come and say, we'll never say in a month when we're sitting in Florida, we're not going to be looking at each other and saying, you know, if we only worked a little bit harder, you can't work harder. And we had a lot of obstacles, and we went through the obstacles. And we just got 75 million votes, and that's a record in the history of sitting presidents. That's an all-time record by a lot, by many millions. In the history of sitting presidents, it's been really just an honor. One of the things we're very, very proud of is the selection of almost 300 federal judges and 3 great Supreme Court justices. That's a very big number. That's a record-setting number. And so we've done a lot, and there's still things to do. The first thing we have to do is pay our respects and our love to the incredible people and families who suffered so gravely from the
China virus. It's a horrible thing that was put onto the world. We all know where it came from, but it's a horrible, horrible thing. So be very careful. Be very, very careful. But we want to pay great love to all of the people that have suffered, including families who have suffered so gravely. So with that, I just want to say you are amazing people. This is a great, great country. It is my greatest honor and privilege to have been your president. I will always fight for you. I will be watching, I will be listening, and I will tell you that the future of this country has never been better. I wish the new administration great luck and great success. I think they'll have great success. They have the foundation to do something really spectacular. And again, we put it in a position like it's never been before, despite the worst plague to hit since, I guess you'd say 1917, over 100 years ago. And despite that, the things that we've done have been just incredible, and I couldn't have done it without you. So just a goodbye. We love you. We will be back in some form. And again, I want to I want to thank our Vice President, Mike Pence, and Karen. I want to thank Congress, because we really worked well with Congress, at least certain elements of Congress. But we really did. We've gotten so much done that nobody thought would be possible. But I do want to thank Congress. And I want to thank all of the great people of Washington, D.C., all of the people that we worked with to put this miracle together. So have a good life. We will see you soon. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. सुना आपने राष्ट्रपति ट्रंप को अपने आखिरी भाषण में जो विदाई के समय उन्होंने वॉशिंगटन एयरबेस पर दिया। खास बात, यू विल सी अस इन अनदर फॉर्म, यानी किसी तरीके से आप हमको दोबारा देखेंगे। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या वो जो खबर आ रही है कि अपनी पार्टी बनाएंगे राष्ट्रपति ट्रंप, उसमें वाकई में दम है? पैट्रियट पार्टी जिसका नाम बताया जा रहा है, अमेरिकी अखबारों के हवाले से खबर आई है। राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी पत्नी आखिरी विदाई लेते हुए राष्ट्रपति के तौर पर और वॉशिंगटन से सीधे अपने घर, अपने गृह प्रदेश फ्लोरिडा लौट रहे हैं। अब एयरफोर्स वन से वो उड़ान भरेंगे। एयरफोर्स वन अमेरिकी राष्ट्रपति का सरकारी औपचारिक विमान है और ये आखिरी बार राष्ट्रपति के तौर पर उनकी एयरफोर्स वन में उड़ान होने वाली है। और यहाँ से वो अभी अपने आखिरी भाषण में अपनी पूरी फैमिली का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने साफ कहा कि इस फैमिली के पास बहुत आराम की ज़िंदगी थी, लेकिन सब छोड़कर इन्होंने यहाँ पर काम किया, आपके लिए काम किया, अमेरिका की जनता के लिए काम किया। कोरोना काल के अपने काम गिनाए और ये साबित करने की कोशिश की कि उनको 7.5 करोड़ वोट जो किसी भी राष्ट्रपति को चुनाव में राष्ट्रपति रहते हुए हासिल हुए हैं, वो इसीलिए हैं कि उन्होंने काम बहुत अच्छे किए, चाहे वो अर्थव्यवस्था के हों, चाहे वो कोविड मैनेजमेंट के हों, या फिर जो भी उन्होंने काम किए। उन्होंने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि हम सब जानते हैं कि ये सारी मुसीबत, सारी परेशानी, सारी बीमारी कहाँ से आई है। उन्होंने कहा कि हमने इतनी मजबूत फाउंडेशन, इतनी मजबूत बेस बना दी है कि नए एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसको उन्होंने बधाइयाँ भी दी कि हमारी नई सरकार को, नए एडमिनिस्ट्रेशन को और मजबूत अमेरिका बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने आखिरी उद्बोधन में इन तमाम बातों को अंडरलाइन करने की कोशिश की, लेकिन जो खास बात है वो 2 चीज़ें। पहली बात तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वो राष्ट्रपति
जो बाइडेन जो नए बनने वाले हैं उनके स्वेरिंग इन में, उनके शपथ ग्रहण में क्यों नहीं जा रहे हैं। और दूसरी खास बात, उन्होंने इशारा किया कि आप जल्द हमको किसी और फॉर्म में, किसी और रूप में देखेंगे। वॉशिंगटन एयरबेस से रवाना होते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी हाथ में हाथ पकड़े हुए एक साथ विमान की सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी बार उनको सलामी दी जा रही है अमेरिकी सेना की तरफ से। सवार हो रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त वॉशिंगटन से सीधे जुड़े हैं। और जैसा कि मैं लगातार बार बार आपको बताता आ रहा हूं कि एकमात्र हिंदी न्यूज़ चैनल है जो इस वक्त अमेरिका से पूरी कवरेज दिखा रहा है। सौरभ शुक्ला भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, विवेक काजू जी भी है। लेकिन प्रणय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस लाइन का मतलब क्या है कि मैं किसी न किसी फॉर्म में आपके बीच रहूंगा? क्या कहना चाह रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप? संदेश बिल्कुल साफ है सुमित, मैं वापस आऊंगा, किसी न किसी फॉर्म में वापस आऊंगा। सी यू सून जो आखिरी शब्द डोनाल्ड ट्रंप ने कहे वो निश्चित रूप से बताते हैं कि वो अमेरिका की राजनीति के अंदर अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते हैं। वो आप उन्हें पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक फोर्स के तौर पर वो अपनी राजनीतिक उपस्थिति मौजूद कराना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में, और यही उनकी कोशिश थी, यही मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की। अब वो आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। साथ ही एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है सुमित, उन्होंने जो कहा कि वी वुड बी वॉचिंग, हम देख रहे हैं, यानी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नई सरकार के जो भी फैसले होंगे उसके अंदर ट्रंप की टिप्पणियां आती रहेंगी। महत्वपूर्ण चीज यह है कि ट्रंप की जो राजनीति है, ट्रंप चाहते हैं कि वो वापसी करें 2024 में, उनके पास एक बार फिर मौका हो सकता है, क्योंकि जिस उम्र में जो बाइडेन ने चुनाव लड़ा लगभग उसी उम्र में होंगे डोनाल्ड ट्रंप जब 2024 का चुनाव हो रहा होगा। तो वो वापसी की संभावनाएं देख रहे हैं, वापसी की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो कैपिटल हिल के ऊपर एक प्रोसेस चल रही है महाअभियोग की, उस प्रोसेस के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी की कोशिश इसी चीज को लेकर है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चुनावी प्रतिबंध लग सके, खास तौर पर 6 जनवरी को जो घटना हुई उसके बाद से। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से जो चुनावी कवायद है, चुनावी कसरत है, वो अमेरिका के अखाड़े के अंदर होती है। डोनाल्ड ट्रंप वापसी कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो करते हैं, उनके बेटे करते हैं, या अगला चुनाव कौन लड़ता है, किस स्वरूप में। जी बिल्कुल, मेरे साथ विवेक काजू जी भी हैं, और मेरे ख्याल से हम सबसे अधिक वो अमेरिका और भारत के संबंधों को जानते हैं। काजू साहब, क्या मतलब है इसका, राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना कि मैं वापस आ सकता हूँ, किसी न किसी रूप में बीच में रहूँगा? हम ये जानते हैं कि अभी अभी रिपब्लिकन्स में 10 लोगों ने उनके साथ वोट नहीं किया जब उनके ऊपर इम्पीचमेंट आया था। इस स्थिति में क्या वो रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी हो सकते हैं अगले चुनावों में, या वो अपनी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अपनी तैयारी कर रहा है। मैंने इसके पहले भी आपके चैनल पे कहा कि जो भी उन्होंने रवैया अपनाया है आज के दिन, वो
यही दर्शाता है कि वो अपने दावेदारी की फाउंडेशन आज ही ले कर रहे हैं। और ये जो उनका आज बयान आया है, जो स्पीच थी, वो अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसी स्पीच किसी भी आउटगोइंग प्रेसिडेंट ने नए प्रेसिडेंट की स्वेरिंग इन के 3 घंटे पहले कभी नहीं दी। कल जी सौरभ यहाँ पे मौजूद हैं, आप मीडिया के हैं। कल की चाहते हैं ये ट्रम्प ये चाहते हैं कि कल मीडिया की हेडलाइन या आज मीडिया की हेडलाइन दो हो, एक तरफ बाइडेन की स्पीच, दूसरी तरफ इनकी। ये बिल्कुल इससे बढ़ के कोई चुनौती हो ही नहीं सकती। काजू आधा साहब, मिनट और आपकी बात आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं आऊँगा आपके पास, हम उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोटे तौर पर उन्होंने जो बात की वो समझ में आ रही है। जो काजू साहब बोल रहे हैं, अभी से अपनी अगली दावेदारी पेश कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, और ये समझना चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप भले ये चुनाव हारकर वापस फ्लोरिडा लौट रहे हैं, लेकिन वो निकल गए हैं, अमेरिकी राजनीति से उनकी दूरी हो जाएगी, ये मान लेना भी जल्दबाजी होगी। लगातार ये बड़ी कवरेज हमारे पास लगातार जारी है, नमस्ते बाइडेन और डॉक्टर ट्रंप के नाम से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, तमाम खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। बता दें आपको, जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह सीधे वॉशिंगटन से प्रणय उपाध्याय आपके लिए लेके आएंगे, बने रहिए हमारे साथ।